धड़क 2 को इतना प्यारा रिस्पांस मिल रहा है, लोग इतना सराह रहे हैं इस फिल्म को। सिद्धांत और तृप्ति ने इतना बढ़िया काम किया है, उनकी केमिस्ट्री इतनी सुंदर है। तो उसके बाद उन्होंने जो लाइन बोली वो मुझे सुनाई नहीं दी, क्योंकि उसके बाद 3-4 सेकंड तो धर्मा की ट्यून कान में बजी। कौन सी? वो शाहरुख खान वाली। वही और अगर धर्मा की ट्यून बजी तो मतलब शाहरुख खान भी खड़े हो गए। लेकिन हाँ, इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया एक महान इंसान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है। I'm a big fan of Shahrukh Khan. Oh, I can totally relate. Oh, and also your orange juice, right? And then I realized it's referring to my role in Malega. Super Boys of Malega. ऐसा कौन सा मुद्दा होता कि मैं जूरिस्प्रूडेंस नाम के किसी कॉन्सेप्ट को हाथ भी लगाती। Okay. मुझे फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स जब आते हैं तो कोई और पढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि 5 लाइनों बाद मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, सिर्फ शब्द पढ़ने लगता है, क्योंकि वो लैंग्वेज है ही नहीं हमारी। आफ्टर सो मेनी कट्स, आफ्टर सो मेनी एडिट्स आल्सो द फिल्म इज एक्चुअली रीचिंग the hearts of the people. So firstly, good to see you. Tell us something. Response कैसा मिला है? अगर हम बात करें रिस्पॉन्स की, एंड लोगों ने कितना पसंद किया आपके किरदार को, सबसे पहले रिस्पॉन्स और किरदार के बारे में जानना चाहिए। वी वेरी लकी कि धड़क 2 को इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इतना सराह रहे हैं इस फिल्म को। और मुझे ऐसा लगता है जिस शिद्दत से और जिस जज्बे से हमने ये फिल्म बनानी शुरू की थी, और शाजिया ने जिस जज्बे से इस कहानी को आगे लेकर आने की कोशिश की थी, सच में द सोल ऑफ दैट फिल्म इज इंटैक्ट, और वही जज्बा लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बहुत बार आप फिल्में या जो भी कंटेंट बनाते हो उसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती है, जब तक वो ऑडियंस तक पहुंचता है कंटेंट, लिखा तो कुछ और होता है जब शुरुआत होती है तब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्यारी चीज़ हुई है धड़क के बारे में, कि after so many cuts, after so many edits also, the film is actually reaching the hearts of the people, और इतना लोग रिप्रेजेंटेड फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ आपके साथ। आप लिविंग इन इंडिया, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू सम और द अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ रिलेटेबल हो रही है। सिद्धांत और तृप्ति ने इतना बढ़िया काम किया है, उनकी केमिस्ट्री इतनी सुंदर है, और इतनी सादगी से दोनों ने इस कहानी को अपने शोल्डर्स पे कैरी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इनसेंस है इस कहानी का, वो लोगों तक पहुंच रहा है और वो उनके दिल को छू रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो बात। How you got the call? किस तरह से आपको सबसे पहला कॉल कैसा, किनका आया था? सर का आया था कि मैम का आया था, कि उनकी टीम से किसी ने आपको कॉल किया और कहा कि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट? मुझे तो ऑडिशन कॉल आया था मुकेश छाबरा जो है कास्टिंग डायरेक्टर, उनकी टीम से। तो उत्सव नरूला was the person who was taking my audition. He is a very good actor himself. तो मुझे जब बताया गया इस ऑडिशन के बारे में, तो मैंने कहा कि अच्छा ये कैरेक्टर है, ओके, फीचर फिल्म के लिए है। तो काफ़ी डिटेल्स दिए जाते हैं जब आपको ऐसे कॉल्स आते हैं। तो एंड में मैंने पूछा कि किस प्रोडक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा ये धर्मा प्रोडक्शन। तो उसके बाद उन्होंने जो लाइन बोली वो मुझे सुनाई नहीं दी, क्योंकि उसके बाद 3-4 सेकंड तो धर्मा की ट्यून कान में बजी। कौन सी? वो शाहरुख खान वाली। वही और अगर धर्मा की ट्यून बजी तो मतलब शाहरुख खान भी खड़े हो गए। लेकिन it was the most exciting thing. It was the most exciting thing कि मतलब after like 10 years of journey as an actor, there comes a call one fine day randomly to audition, and opens up a possibility to audition for such a big scale and such an amazing production house per se. Did you saw the first part before this? Did you saw the first part or the second? I know it's very completely different. So Dhadak 2 is based on a Tamil film called Periyaram Peru. तो उस फिल्म में मेरा और शेखर का जो कैरेक्टर है वो ट्रैक है ही नहीं। और शाजिया चाहती भी थी कि हम उस कैरेक्टर को फ्रेश पर्सपेक्टिव से अप्रोच करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म, राहुल और शाजिया ने लिखी है,
तो मुझे लगता है इन दो कैरेक्टर्स को जो है ही नहीं फिल्म में, इतने अच्छे लेयर्ड तरीके से पूरे नैरेटिव में उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि Right. ये स्टिच्ड कैरेक्टर्स हैं। हम्म तो ये बहुत ब्यूटीफुली वीव्ड इन है। तो शाजिया ने एक बुक दी थी मुझे रेफर करने के लिए, एंड्स अमंग्स्ट द एलिफेंट्स नाम की, सुजाता गिरला की किताब है। तो एक फीमेल पर्सपेक्टिव मिला कास्ट ऑपरेशन को लेकर, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए वो किताब पढ़ना। तो और जिस अंडरस्टैंडिंग से रिचा का कैरेक्टर क्रिएट किया है कि वो इतनी स्ट्रांग है, अपने मुद्दों पे पुख्ता है, लेकिन शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम बिकॉज शी बिलीव्स इन अ पॉसिबिलिटी that being part of the system she can bring some change, not like Shekhar who's like a complete activist and there to fix things in his own ways. So she becomes like a bridge between Shekhar and Nilesh. She understands why Nilesh is not standing up. She gets his point, but she also knows and truly loves what Shekhar stands for. तो ये जो दो डुअलिटीज है और दो एक्सट्रीम्स है, उसके बीच में ये जो कैरेक्टर खड़ा किया है और इतना ब्यूटिफुली क्राफ्ट किया है उसको, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी सेंसिटिविटी आपको एक नज़र में पता चल जाती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि द एंटायर क्रेडिट गोज टू शाजिया। Did you saw the Tamil version? Did you saw the Tamil version? No, I did not watch it until I was shooting. Okay. After that you watched it. Yes. And what about the refer book? How much that helped you in your building your character? See, when I was auditioning also for that matter, I was going through a lot of YouTube videos. I spoke to a lot of lawyers and I asked them their experiences, their favorite teacher. Okay. कि वो जब पढ़ाई कर रहे थे उनकी फेवरेट टीचर कौन थे और उनको क्या अच्छा लगता था उनके बारे में, because I wanted to be a teacher who was an accessible teacher, not like the other teachers that are shown in the film. So I understood from the script that this is a very accessible person but still a no-nonsense person and still someone who loves this character Shekhar. So you know there were so many shades to it, and किसी चीज़ को be it like our fight for independence या फिर कास्ट ऑपरेशन, ये जो बड़े बड़े सोशल मुद्दे हैं उनको देखने के पर्सपेक्टिव्स होते हैं एंड वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसअग्री। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर का, और कोई बहुत बड़ा रीज़न है ना रिचा के कैरेक्टर का वहाँ होना, तो वो जो सेंसिटिविटी और ग्रेस रिचा ब्रिंग करती है, डिग्निटी ब्रिंग करती है इस सेम सब्जेक्ट को, और जिस डिग्निटी से वो जीती हैं उस पूरे ग्राफ को, जहाँ शेखर से रिलेशनशिप शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेस एंड डिग्निटी। तो मुझे ऐसा लगता है एक फीमेल पर्सपेक्टिव बहुत मदद करता है इन चीज़ों को समझने का, विच इज़ व्हेन द बुक ऑल्सो केम इन प्लेस, सुजाता गिरलास, सो एंड्स अमंग्स्ट द एलिफेंट्स। सो दैट बुक ऑल्सो टोल्ड मी how non-verbal way the discrimination happens, okay, you know, and what it looks like from a female lens. So that was very interesting to see, and still to stand straight and stand strong in that entire background. So it gave me a different perspective along with the YouTube videos that I was watching. तो उस पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले मुझे लॉ सिखाने वाले। आई वाज रियली लर्निंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जो मेरा ओपनिंग सीन है, मैं जानना चाहती थी एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज आई डिडंट वांट टू कम ऑन द सेट जस्ट अराइव एंड से द लाइंस, सो आई लिटरली स्टडीड केस स्टडीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। That's very big thing. Yeah, it's नहीं तो मैं कहाँ, मतलब you know in my artistic journey ऐसा कौन सा मुद्दा होता कि मैं jurisprudence नाम के किसी कॉन्सेप्ट को हाथ भी लगाती। Okay. मुझे फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स जब आते तो कोई और पढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि 5 लाइनों बाद मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, सिर्फ शब्द पढ़ने लगता है क्योंकि वो लैंग्वेज है ही नहीं हमारी। तो मुझे लगा ऐसा कब मौका आएगा जब आई एम कंपल्सरीली पुट to put study your all something efforts like into all it. efforts into Now you are up to for laws. yeah so थोड़ा जो भी मैं पढ़ पाई, it was really exciting and it's very good. The thing is like if you're doing something and if you give your 100%, that's very important. and result जब आते हैं तो वो और अच्छा लगता है, ऐसा होता जी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेपरेशन और ना ही अच्छा है कि आपका प्रेपरेशन ना दिखे।
एक्टर का काम ही यही है कि आपका प्रेपरेशन जो है वो इतना ज़्यादा सीमलेस बनाओ कि ये रियलिस्टिक लगने लगे कि हाँ ये टीचर है भोपाल के किसी यूनिवर्सिटी में. So that was the attempt. So if I talk about the movie, एक चीज मैं अगर लेके आऊँ तो वो है लव, और वो प्यार के लिए हम फाइट करना चाहिए, जो इस मूवी से हम सीखते हैं. पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, दोनों में यही सिखाया है कि हम प्यार करते हैं तो प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं. और आपसे जानना चाहूंगा प्यार की परिभाषा क्या है, व्हाट्स लव फॉर यू? वाओ, इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा सवाल पूछ एक लिया एक आपने. महान इंसान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है. I'm a big fan of Shah Rukh Khan. That's why Oh, I it's can like- totally relate. So what's love for you? If what's a key to your heart? Tell me something that. I think co-creation and companionship, and I feel having space in front of each other to make mistakes. Okay. I think that's very important. Apart Right. from that, Apart from that, I think, of course, like, you know, what makes you impress? If someone want to impress you, what makes it? honesty and simplicity. That's so cute. Yeah, these are two things that I would anytime fall for. Okay. Going back to the movie, करण सर से जब पहली बार मुलाकात हुई, क्या थी, किस तरह से आपकी बातचीत थी उनको लेके, एंड उनके साथ काम करने में सबसे बड़ी बात क्या है, that one thing that you have learned? Sorry, I haven't met Karan sir. You actually. haven't- I haven't met. Okay, No, I have but never what met about him. his production team, the man who? Absolutely amazing. सोमेन सर जो है वो इस फिल्म पे थे हमारे साथ, and what a lovely production. I mean, small little, you know, and you know so much about the production once you know the grassroots people and what and how their behavior is, and it tells you so much about the main captain of the ship, you know. So Dharma has been very kind and supportive, and I also feel that they've really supported the film in Yeah. a way. For such a long time we have been waiting for this film to be out. It has gone through so much of like rigmarole of like censorship and, you know, so many edits and all that, and for a production house that big to stand by this entire journey, which was not a very hunky-dory positive journey, it's a big thing, and I feel it's really commendable. And This- he's received a national award now, Yeah. which is amazing. This 10 years of your journey, and if I talk about the last two projects, Dhadak 2 and Super Boys of Malegaon, how do you see this last two project and how much this is helping you to get new project? I know कि हम एक जर्नी जीते हैं, एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि हाँ ये दो चीजें हो गई, अब मुझे यहाँ से I'll get more and more work, and this 10 years you have worked so hard to get to this project, Super Boys of Malegaon, and now this Dhadak 2. Yes. How much this is helping you out, and after 10 years, how do you see this two project completely? After more 10 Yes, years? nahi, this 10 years, Acha. this 10 years, the hard work of this 10 years, two project, Super Boys of Malegaon and now Dhadak 2. And after 5 years, how do you see yourself? Okay. Firstly, let's start with the 10 years and then we'll speak about the next 5 years. मुझे ऐसा लगता है कि all the 10 years that now that you're saying it, I realize that it's almost been a decade that I've been at it. But the way Dhadak 2 also, like the central theme is, you know, when it comes to survival, how far will you go? Yeah. Right? That's the theme of my first ever scene in Dhadak 2 also, the case study that I present, you know, for that survival, how far will you go? I think choosing acting was also that desperate a passion for me. Matlab, I don't think so I have loved anything that deeply ever. So now that I look back, it feels like it's been 10 years, but it didn't feel like 10 years at all, because I have been, touch wood, love with this profession, and I Yeah. don't think so I would have done anything else with so much love
and so much acceptance. And I'm not saying the journey was like all happy. There have been very, very tough phases where I felt, why did I have to choose something so tough and so difficult and like a not so easy path? But I think it's all meaningful when a project like Superboys of Malegaon comes in. Project like Dhadak 2 comes Very great in. movies for Superboys of Malegaon. Yeah, and I feel these are cult classics in a way, and they're of course we're watching them now, but over the few years, as you said, after 5 years, if I were to look back, forget about 5 years. If like after 20 years also, if I watch these films, I will be proud of them. Yeah. I would like to show these films to the generations coming ahead. We had a screening yesterday with Dalit Panther and student organizations and activists, and they were so touched and they were so affected, and it felt so surreal for me. There were so many old activists, like 75 years old, 80 years old. They were there yesterday. And I felt, and funnily, I did not know and I did not expect that, some of them would be my father's friends. And they came to me and after the film, they said that, if your father were to be there, he would be so proud today to see and watch you in a film and a meaningful story like this one. So मुझे ऐसा लगा कि कल उनकी आंखों से मेरे बाबा ने देख ली फिल्म. So I think if your artwork can give you a moment of joy, this meaningful, then it's all worth it. Yeah, that's true. And believe me, after I don't know how many years, Superboys of Malegaon will turn a very classic movie. Very, very classic movie. Thank you. Cult classic. Thank you. Funnily, I had gone to audition for a project, like very recently, and after the audition, they were seeing my audition, and the person who was taking the audition, he said, "Oh, so you'll require your vanity for this, right?" What was your response? So I said, "What is he saying? I didn't I said, "Why are we talking about vanity in an audition, like a vanity van?" So I didn't understand. And then he said suddenly, "Oh, and also your orange juice, right?" And then I realized he's referring to my role in Malegaon. Superboys of Malegaon. Right. But that's the sweet thing, like, the conversations when I enter the audition rooms have changed, which is the sweetest, I think. I love these changes that people still remember with your character. Yeah. That's so great. Thank you so much for the interview and all the best for your upcoming project. I hope we meet up like this in the same room with the same PR team on a regular basis. Thank you so much. I would love to talk about my play, if you may. Yeah, it's so fine. Yeah. You want to say something? Yeah. So if you could ask me anything about it. About your play? About my play. You say whatever you like it. No, please ask me a question. I'm horrible at saying things like that. Look, let's keep it candid. Yeah. Tell us something. I won't ask you anything. You tell me, what would you like to say me about your play? Okay, so I'm doing this play called Manjari Matching Center. Okay. It's a play about why I'm named what I'm named. Okay. And Manjari Matching Center. Okay, Manjari Matching Center. Yeah. So Good it's name. A play, thank you. It's a play written by me and I perform it. It's a solo play, 80 minutes long. I come on stage and for 80 minutes there is no exit. So I'm there throughout and I play some 27 characters. And it's an exciting play because it's a relationship between a daughter and a father. And we don't talk enough about our fathers is what I realize. And whenever we talk about our fathers, either we completely negate and make it like a negative image, or we completely make a positive image out of it. So मुझे ऐसा लगा कि it's very rare that we speak about the complexities in its utter honesty. Yeah. So my play talks about that, and I'm performing on 7th of September at Neeta Mukesh Ambani Cultural All Center. the best for that. Thank you. Tell me something, your relation with your father, how was it? Beautiful, beautifully complex, and he was an art director at Films Division. So we grew up understanding about films and looking at films in a very academic way.
till date, I find it difficult to look at this field as a glamorous field because I grew up watching it like an academic thing. But I know, and when I wanted to pursue acting, he was not in the favor of it at all. And Okay. sadly, he could never watch any of my work, any of my screen work, not even like much of my theater work. So that one thing I carry in my heart, that I could never prove it to him. He left way before I could prove that I can become an actor. He is watching you from upstairs. Yeah, I know. But yeah, my artwork reflects him, my conversations reflect him, which is the most beautiful part, I feel. Thank you so much, and all the best for your play, Thank which you. is going to come up. And thank you so much for this lovely interview. Thank you. Emotional, happy, very, very, very good interview. Sweet. Thank you. Thank you.